Hello everyone, welcome to a new video lecture. This video lecture is the first in series for Foundation in Management Accounting (FMA) uh, that you all know as F2. इस lecture में it's not like a lecture, to be very honest. It's basically introduction to the subject जिसमें हम बात करेंगे कि FMA है क्या, इसमें किस तरीके का कोर्स पढ़ाया जाएगा और इसका पेपर पैटर्न क्या होता है एंड व्हाट्स द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द सब्जेक्ट बेसिकली, राइट? सो इट्स अ शॉर्ट वीडियो प्रोवाइडिंग एन इंट्रोडक्शन टू एफएमए। सो बेसिकली अगर हम बात करें एफएमए की, सो एफएमए जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है एमए 1 और एमए 2 के सिलेबस पर। आप जो चीज एमए 1 में पढ़ते हैं वो एमए 2 में रिवाइज होती है, कुछ नई चीजें ऐड होती हैं। तो जो एमए 1 और एमए 2 के सब्जेक्ट्स हैं वो दोनों फिर इनकॉर्पोरेट कर दिए जाते हैं आपकी एफएम। सो बेसिकली एमए 1 जो है और एमए 2 दे बेसिकली कॉन्स्टिट्यूट 60%, 55 to 60% ऑफ योर एफएमए सिलेबस। और एफएमए में जो उसका अपना सिलेबस है, जो न्यू सिलेबस है, दैट इज जस्ट 45 to 40%। ओके, तो एफएमए में जस्ट जो न्यू सिलेबस है दैट इज 45 to 40%, बाकी आपका प्रीवियस नॉलेज ही इसमें टेस्ट होता है। अगर हम बात करें इसके पेपर पैटर्न की, तो पेपर पैटर्न में इसमें थोड़े से चेंजेस आते हैं एज कंपेयर टू एमए 1 एंड एमए 2। इसमें 35 MCQs होते हैं and each MCQs is worth 2 marks, so that gives you 70 marks। and as you know, ये MCQs कहीं से भी आ सकते हैं, ठीक है? इसमें से कुछ पे fill in the blanks होती हैं, कुछ कुछ MCQs में आपने दो तीन जो ऑप्शंस हैं उनको सिलेक्ट करना होता है, और कुछ में जो नॉर्मल MCQs आते हैं उस तरीके के। देन नंबर 2 में आपके पास 2 MTQs होते हैं। MTQs कहते हैं मल्टी टास्क क्वेश्चंस को। Each MTQ is worth 15 marks। ओके, यानी हर MTQ जो है वो 15 नंबर का होगा। सो 2 into 15 दैट मेक्स टोटल ऑफ 30 marks। सो पेपर आपका 100 marks का ही है। अब एमटीक्यू अगर मैं आपको बताऊं तो एमटीक्यू में ये होता है कि आपको एक सिनेरियो दे दिया जाता है और उस सिनेरियो से रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। Now, 15 marks does not mean that there will be an entire question worth 15 marks. No, ये 15 marks break down कर दिए जाते हैं smaller numbers में. For example, there might be 2-3 MCQs worth 2 marks. There might be a true-false question worth 1 marks. There might be a fill in the blank worth 1 or 2 marks. There might be a match the column worth 2-3 marks. Right? So ये जो 15 marks हैं इनमें further breakdown होता है. Okay? इट इज वेरी प्रोमिनेंट कि ये जो आपके एमटीक्यूज हैं ये बेसिकली आपके सारे के सारे एफएमए के सिलेबस से आते हैं। और इनके लिए जो है स्पेसिफिक चैप्टर्स होते हैं जिनमें मैं आपको बता देता हूँ। बजटिंग का चैप्टर बहुत फेमस है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का चैप्टर बहुत फेमस है, और मेजरली बजटिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कंबाइन होकर आते हैं। नंबर 3, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इन्वेस्टमेंट अप्रेजल इज द सेम चैप्टर जो आप एमए 2 में पढ़ चुके हैं। एंड नंबर 4, इसमें परफॉर्मेंस मेजरमेंट का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो परफॉर्मेंस मेजरमेंट आप एफ एफ ए में जो है वो पढ़ चुके होते हैं। तो ये जो 4 चैप्टर्स हैं दे बेसिकली कॉन्स्टिट्यूट द 30 marks, 30% ऑफ योर पेपर, एंड इनमें से ही आपका एमटीक्यू आता है, ठीक है? एंड इसके अलावा ये चारों चैप्टर्स टेस्ट हो सकते हैं आपके 70 मार्क्स में भी। Okay, so these chapters will give you 30 marks, 30 to 35 marks. Okay, and the rest of the syllabus of FMA is going to give you around 65 to 70 marks. Okay, so this is how the pattern works. Now, there is a very misconception among the students कि हमने तो MA 1 भी पास कर लिया है, MA 2 भी पास कर लिया है, so we are going to pass FMA very easily. Let me break your heart, guys, but this is not the reality. Okay, FMA is considered to be one of the most technical subject in the foundation level, okay, or in the applied level of the ACC at the moment.
The reason behind this is आपने बेशक MA1 पढ़ा है, MA2 पढ़ा है, but what happens is when you come to FMA, your level enhances a lot. The technicality of the question, the complexity of the question, the wording of the question, that becomes quite difficult. The information within the question become quite complex. No doubt आपने accounting for material पढ़ा है, FIFO LIFO को पढ़ा है, आपने bonuses पढ़े हैं, आपने absorption पढ़ी है, but the level of the testing here, it gets a bit denser, it gets a bit technical. आपसे वो वही चीज पूछ रहा है, कॉन्सेप्ट्स में कोई चेंज नहीं आया, बट जो टेस्टिंग मेथोडोलॉजी होगी एग्जामिनर की, दैट बिकम्स अ बिट मोर टफ, बिकॉज ही इज गोइंग टू expect now that you are very much well aware of the concepts and have a very quite grip over the concepts now, right? So that is why I will always recommend you guys. No doubt आपने MA1, MA2 पढ़ा है, but for FMA, do revise MA1, MA2 syllabus within the FMA. Do practice a lot. जितना आप practice करोगे उतना अच्छा है. Make sure to give appropriate time to theoretical sections as well, okay, and numerical sections as well. Right, we cannot confirm that whether आपका paper numerical आएगा or theoretical आएगा. Both are equally important. There are some chapters जो purely theory के हैं, there are some chapters जो purely आपके calculations के हैं, right? In those chapters we can definitely tell, right, कि यहाँ पर आप numerical पे focus करो, यहाँ आप theory पे focus करो. The average time period जो MA1 और MA2 का स्टूडेंट जब FMA में आता है और जो एवरेज टाइम है वो कंप्लीट करता है, दैट्स अराउंड 1 मंथ. ओके, 1 मंथ में इजीली आप FMA कंप्लीट कर सकते हो इफ यू आर फ्रॉम एन MA1 or MA2 background, or let's say 1.5 months. Okay, and trust me, the person who has well passed MA1, MA2 can easily pass FMA. It will be a piece of cake for them. And always remember that FMA, it is basis for one of the most technical subject in the ACCA, that is F5, and you all know it as performance management. Okay, if I tell you guys, the first chapter of the performance management is named as introduction, a revision to management accounting, and उसमें आपके management accounting के तमाम major concepts discuss हुए हैं. So if you pass FMA with good concepts, with clear concepts, with a strong grip, there is no doubt that you cannot pass F5. But अगर आपने FMA जो है वो guess पे pass कर लिया और luck लग गई, तो FMA में you are going to get stuck. Right? So, but trust me, guys, it is a very misconception that F5 is a difficult subject. F5 is a technical subject. Okay, and technicalities can only be dealt with strong grips over the concepts. Okay, so I do not mean to scare you all, guys, but trust me, guys, this is the reality, right? And do not think that you have passed MA1 and MA2, you can easily pass FMA. No, this mentality is going to get you guys wrong. Okay, so now how you are going to pass, so I am right here with you guys to help you over this. Okay, I am going to make video lectures in such a way that they are going to cover the major chunk of the theory in depth, and I'm also going to make separate practice videos in which I'm specifically be focusing on different technical concepts in the MCQs. I will be conducting the mocks over for my registered students and all that. So I have a complete package for the guys that are really interested, that are really serious about this subject. Okay, and trust me, this is one of my favorite subjects. So and trust me, when I know the areas that are difficult, I know the areas that are easy, so I'm gonna make it a piece of cake for you guys, only if you guys show the consistency and commitment. Right, so this was all regarding the introduction. We are going to start. I'm going to start the this chapter. This subject, sorry, my bad. The subject of management accounting with chapter cost classification. Okay, in cost classification, the video lecture that I will be preparing will be including the entire chapter. So until then, take care, guys, and have a good day. Bye.